बाय मोमेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर, एक होता है प्रेजेंट. नो वन लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट. आइंस्टाइन ने कहा है आइदर वी लिव इन द पास्ट और इन द फ्यूचर. जैसे मैं बैठा हूं तो मैं सोच रहा हूँ 8 बजे क्या करूंगा, 9 बजे क्या करूंगा, उसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ. ये नहीं सोच रहा कि मैं जो सांस ले रहा हूँ, जो मैं यहाँ आराम से चेयर पे बैठा हूँ, मैं उसको एंजॉय करूँ. तो माइंडफुलनेस इज ए प्रेजेंट मोमेंट. सो बेसिकली इसको कंसेप्ट को देखा जाए तो पहले इसको विपासना या महात्मा बुद्ध ने कहते इसको इन्वेंट किया था. जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ गया में पेड़ के नीचे, तो उसने देखा कि सब कुछ हमारे शरीर में है, वैसे ही भटकता रहा. तो माइंडफुलनेस कंसेप्ट बुद्धिस्ट से आया. कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है. इम्परमानेंस प्रिंसिपल से ये डेवलप हुआ. इसके कई पिलर्स हैं. इट्स वेरी वेरी यूजफुल. कभी भी आप भीड़ में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अगली गाड़ी का ध्यान रखना चाहिए. कभी भी एक्सीडेंट होने के चांसेस कम. कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको फुली फोकस्ड अटेंशन देना चाहिए. कोई वुमेन किचन में काम कर रही है तो उसको फुली फोकस्ड करना चाहिए. तो ये प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस, फुली फोकस और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी जो एक्सटर्नल वर्ड है या इंटरनल वर्ड है, कोई थिंकिंग है, हमारी फीलिंग है, वो बहुत अच्छा है और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है. बट अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर आप यूएसए के स्कूल में जाओगे तो 70% स्कूल में माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है. हमारे कंट्री में ना तो इसकी ट्रेनिंग है. बट सर अगर आप देखेंगे, जैसे आपने कहा कि हम बैठे हुए, हम अभी कुछ काम कर रहे हैं तो हम उसमें ध्यान दें, पर हम आजकल एक टाइम पे एक काम करते भी कहाँ है. हम उसी टाइम पे साथ में कोई वीडियो चल रहा है, ये स्क्रीन चल रही है. बिल्कुल मीनल, आपने बिल्कुल कहा कि हमारी जो लाइफ है बड़ी कम्प्लेक्स हो गई है. माइंडफुलनेस मीन्स गोइंग फ्रॉम कम्प्लेक्सिटी टू सिंपलिसिटी. नेचर की तरफ जाना है. बेसिकली वी आर ए ह्यूमन बीइंग. सो एक टाइम पे जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर हम फुली फोकस्ड सिंपल करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट रहने की कोशिश करें. फॉर एग्जांपल माइंडफुलनेस ब्रीथिंग कर रहे हैं तो मेरे को इनहेलेशन, उसको थोड़ा पास और एक्सलेशन करना चाहिए. क्या होता है, देयर इज अ स्टिमुलस, देयर इज अ रिस्पांस. अगर बीच में थोड़ा पॉज आ जाए ना तो दैट इज माइंडफुलनेस. अगर हमारे सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को आप देखोगे, वन इज माइंडलेसनेस. आप गाड़ी हमारे यहाँ पे आओगे ना बठिंडा में, आप हाईवे पे जाओ, लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं, दे आर माइंडलेसनेस. अगर आप माइंडफुल होंगे, जैसे यूएसए में देखोगे, वहां की ड्राइविंग ही डिफरेंट है. सो देखोगे ना, तो अगर माइंडफुल होंगे तो ऐसी हमारी थिंकिंग है, ऐसी हमारी ब्रीथिंग है. अगर हम अपनी ब्रीथिंग की रिस्पेक्ट करेंगे तो माइंडफुलनेस ब्रीथिंग हो गया, माइंडफुलनेस वॉकिंग हो गया, माइंडफुलनेस स्पीकिंग भी हो गया. तो दैट इज वेरी वेरी. So this is third way psychotherapy. So it's very very interesting. It basically it is a skill. इट्स गुड टू हियर कि हम जो काम कर रहे हैं उसको पूरे ध्यान से और पूरे अटेंशन से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, नॉन जजमेंटली, उसमें ना वो नहीं देना, जजमेंट नहीं देना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब दिस इज वेरी वेरी पर्पस, मतलब नॉन जजमेंटल होना चाहिए. ठीक है सर, आपके साथ इसके बारे में आगे और सेशन में और बात करेंगे. महिमा, आप हमें ये बताएं कि जैसे आजकल का जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी हमारी, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, क्रिमिनल टेंडेंसीज, जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज, सब्सटेंस अब्यूज, डिप्रेशन यंगस्टर्स में, एडोलेसेंट्स में, सुसाइडल टेंडेंसी. तो हम इस सबको किस तरह से देखते हैं, या ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे हम एड्रेस करें? Firstly, I would really like to thank you. So yeah, I have seen it in the order to prioritize mental health issues. Acknowledgement, admission, and understanding. These are the three things which play like really vital role. So at personal level, an individual should acknowledge the wellness level of their mental health. If found unsatisfactory, the level of mental health, they should admit it to acknowledge. So when they will get into the process of being in a better state of mental health, then they need to understand that it's stable state between a margin, not a point. So today we are gathered here not to only raise awareness about the mental health, but also foster a deeper understanding of challenges that youth individual faces in everyday life or ever changing landscape. So yeah, coming to your question, the problems which youth are facing related to mental health are social pressures. Adolescent and early adulthood often come up with the often increased stress,
pressure, including academic expressions, peer relationship, family dynamic plays a very important role, and the process of identification, identifying the formation, and these pressures can lead anxiety, depression, and low self-esteem. So the number of rising suicide cases are silent epidemic in India. It is silent because in most of the students' suicide cases, the friends and family, they are unaware about what the child is going through. So I have written down something. In most of the cases, the student who die by society, who die by suicide, do not share the inner turmoil with anybody, and the frustration and the grief they go through. Also, you can notice that I have mentioned the term. I haven't mentioned the term commit. Instead of, I said died by suicide. To quickly shed a light on this, when you use a word commit, it puts a lot of pressure on you, or on a lot of pressure on the person, or responsibility on the victim. When you use the term died by suicide, it removes the culprit, from the person who lost their life. So we think that it's just about mere numbers, or we think that it's just about the numbers, like how many students are dying, but it's actually about the life. We are losing the bright minds. It feels really sad to mention this. Every year कहीं ना lakhs of कहीं students इंडियन leave फैमिलीज में their इस तरह का है कि बच्चे बात नहीं कर पाते, yes. वो गैप है, वो अपने सिबलिंग्स के साथ भी नहीं शेयर करते, पेरेंट्स के साथ भी नहीं शेयर करते, एंड दे कमिट मींस दे लूज द लाइफ. तो दैट इज वरीसम थिंग. Yes, this is yesterday I was just planning what I am going to speak for today. I was like really shocked with the news I saw. So there are times when the child try to open up teachers, but they tend to dismiss it by labeling that it's just attention seeking, or advising them to get stronger, especially with the boys. Boys don't cry, be a man, mard ko dard nahi hota. So with the boys especially, we are like, no, you cannot cry, you're a boy. So in such cases, the child might feel unheard, even rejected as well. So this impact the trust and the comfort the child places in authority figures, the natural caregivers. So they lose the trust because they feel that they are not getting hurt by somebody. Who are the natural caregivers, the parents, the friends as well. Sometimes I really want to mention this point. Even I had 2 back-to-back sessions. Before this, I was having a session in Kamala Nehru College, Delhi University College. So even in that session, we talked about how we are, naming these things. I mean, oh, this is very traumatic. I got bad marks. So we are using such terms, such heavy terms very easily. Even when the person who's actually going through trauma, they feel that people are making fun of them because they're using the terms very easily. They're not even thinking, just like Sir mentioned that speaking mindfully. So language is very important. The language you're using is very important. Yes. So महिमा, आपके बात से ये नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन गैप तो है, उसके साथ साथ स्टिग्मा है, नेगेटिव एटीट्यूड है, कुछ बिलीफ्स है इस तरह के, और उसको अटेंशन नहीं मिलता जब वो आता है अथॉरिटेटिव, जिसको वो समझता है कि मैं इसके पास जाकर अपनी बात कहूँ, उसको डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, तो उसको वहां पे सुना नहीं जा रहा पूरी तरह से. तो सर, डॉक्टर निमेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे इन चैलेंजेस को या नेगेटिव एटीट्यूड्स को, बिलीफ्स को हम किस तरह से डील करें सर? Thank you, Meenal.
I must say that what Mahima narrated was so emotional and passionate as a person and as a professional, and from her experiences, that we must address that first. Um, भाई सही बात कही महिमा ने कि सुसाइड बिहेवियर को बहुत बहुत गलत समझा गया है, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, और कई बार डॉक्टरी रूप से भी. तो वो मुद्दा तो अपनी जगह है. Coming to strategies and solutions, like you're saying, in the field of public mental health, which is relatively new, there was an analysis about 1997, Peter Tyrer ki team say, and one of the things that they mentioned, I got reminded of when Mahima was narrating what she was narrating. One of the 4 or 5 major reasons that that analysis identified why public health field, if I might say, Dr. Meenal, with all respect, preventive social medicine, public health, और उसने psychiatry और public mental health को अब तक neglect किया. One thing is that psychiatry and mental health practice is essentially about private individuals, individual suffering. So it's been difficult for both the partners, people in psychiatry and mental health and people in public health, to visualize, conceptualize, and operationalize and implement a public mental health program. Because it's essentially about private lives, sensitive material. And yet, as we will realize, there is a need for it, especially in countries like India, where we deal with masses in millions. There is a need for stepping out of the clinic, not just in community outreach clinics, but also in evolving public mental health programs for preventive promotive nature. To pick up an example from what Mahima was describing, see a young adolescent feeling suicidal or feeling highly distressed so as to feel suicidal. Individual cases need to be handled with sensitivity by family, by friends, by supervisors, by authorities, or even by mental health professionals individually, surely. But in the larger scheme of things, preventive and promotive programs for either suicidal ideas not happening, either distress becoming lesser to be handled, or distress not converting to suicidal ideas, or suicidal ideas not converting to action. That can be a matter of still preventive and promotive, larger mass-based programs. So I hope I'm able to get across the dichotomy that we deal with, and we have to deal with even better than we have done for public mental health. While individual instances for treatment and rehab need to be handled with sensitivity in a clinical manner, preventive promotive programs need to be seen on a larger scale, just like about 100 years ago, we saw the public hygiene movement. Early part of the 20th century, we saw the public hygiene movement, and it came up, from Typhoid Mary to onwards. So same thing needs to be applied here. And here one differentiation needs to be made. The nature of mental health problems will matter. See, for distress, day-to-day suffering, lack of mindfulness that my friend Dr. Gurvinder was talking about, and how that leads to serious issues of depression and suicidal ideation or suicide-related behavior, is one kind of problems. That has a lot of rootedness in psychological, social, economic, or perhaps even political issues. And that can be handled. When you come to severe mental disorders like schizophrenia, bipolar, there's a much larger, almost complete genetic, biological basis to it. And so the public health programs for severe mental disorders, schizophrenia, bipolar, alcoholism, will have to be dealt with in a classical public health model, agent, host, environment. Okay. Whereas the common mental disorders will need a slightly different model. You still don't have the basis very clearly identified. So early identification, mass programs for mass screening, early identification and treatment is all applicable to schizophrenia and bipolar disorder and alcoholism. Now, I want to go back for a minute to what Dr. Gurvinder was discussing, and I must give 2 examples. I completely agree with Dr. Gurvinder, and that will also bring me to the strategies and solutions. The 2 examples before mindfulness, to my awareness, are turmeric, if some of you remember, haldi, and yoga. Essentially, Indian or South Asian or Southeast Asian culture, the rooted strong points
were first sent away to the West and then came back nicely packaged and marketed. In fact, I frankly don't understand when did yoga become yoga? I mean, it's yoga, right? Some of our South Indian friends object to it when I say, because they feel more comfortable with yoga than say yoga, because yoga is more Sanskritized Hindi version. But be that controversy a little aside, there's a lot of this issue of good value systems of the East having gone to the West and then come back again, which is also all right. In today's global thinking, especially post-pandemic, let's all feel one. But let's be aware that there are a lot of inherent value systems in our own lifestyle that needs to be retained rather than lost and then regained. Yes. You remember John Milton, I think. John Milton is said to have written these two Mahakavya, big poems, you know. When he got married, he wrote Paradise Lost. When he lost his wife and she died, he wrote this Mahakavya, Paradise Regained. Now, I'm reminded of that. What we are doing in the Eastern world about mental health is first we lose the good points to the West, you know, in trying to become modernized and westernized and globalized, and then we import them from the Western world, exactly like Dr. Gurvinder was saying about mindfulness. Let's try in the 21st century, India and South Asia, to retain a lot of the good points of our culture. One major point, with all the implications that I won't go into. Essentially, Western world has always been and it has become more and more collective, individualistic, hedonistic, and self-centered. We have always had a non-hedonistic, social service-oriented, collectivistic psyche. Now, we need to retain that, you know, including for youth. Okay, so that's one example. The second is this whole issue of what I think Mahima was mentioning. Acknowledgement, I'm with her. Acknowledgement and acceptance. What has happened, unfortunately, is that we are becoming more and more westernized in terms of even mechanization. Let me give an example. Firstly, like Gurvinder was saying, firstly, we make the car driving so comfortable, auto gear also. So kind of you're driving on an expressway at the speed of 120 or 140 miles per hour, self-drive mode mein hai gaadi. So your mind wavers to other things, right? So first we make life so extremist. I give in fact more example from my childhood. Most of you, mashallah, are younger in age, and God bless all of you. India saw the Western bred only in the 60s and 70s. What the Western world went through, we went through in a slightly different example, if you all appreciate. First, we go ultra white in making bread. And then we realize the value of, oh, we have lost the fiber element. So we go to brown bread and multigrain. अरे यार शुरू से ही brown bread रखते ना जो 60s 70s में मिलती थी. But that concrete example, please apply to all psychological and social aspects, including what Dr. Gurvinder was saying. My major message is India has a good opportunity to demonstrate to the world that good development, good economic development is possible while retaining good mental health. Allow me to cite Meenal, what you know already, Gurvinder I'm sure knows, I'm sure Mahima even knows. One good figure. The world figures for psychiatric disorders, prevalence, is global figures are about 25%. Okay, 1 in 4 people, WHO will say. Some of the most developed countries have 40 to 50%. I won't even name the country, the superpower, unipolar world. Okay, 50%. 2 out of 4. In the world, it's 1 out of 4. In India, that figure reliably is just 10 to 12%. Our prevalence is much less than not only the Western world individually compared, but as compared to global figures. We still have the advantage. If we can retain that in next 10, 20, 30 years, that while becoming modernized, while becoming technologically savvy, while becoming economically developed, can we retain the social, psychological values to see that mental health remains in check? So the onus for that is on everyone. Yes. The family structure, the teachers, the society. We all are stakeholders, basically. If I might say in a lighter way, like I was saying yesterday at one of the universities,
Yes, you're right. I agree with you. The onus is on everyone. But we the seniors and the elders have one advantage, or perhaps one fallacy. What we could not do, we now say, please, हम तो नहीं कर पाए, आप कर. हम तो नहीं कर पाए, थोड़ी मेहनत करी, हम नहीं कर पाए, जितना कर पाए हो गया, अब आप लोग younger generation कर. You know? Creating a safe space is very important, and a non-judgmental space, as Dr. Singh mentioned. कि judgment नहीं होना चाहिए कोई भी. That's true. That's true. When it comes to recognizing Basically, mental health. Dr. Gurvinder ने जैसे क्या कि we are complicating the things. The things should be made easier and simpler, and we are just entangling and complicating the scenarios by being judgmental and non-mindful, huh? That means another, जैसे अब लर्निंग हो रही है आजकल की, जैसे बच्चे को कह रहे हैं कि 100 में से 100 नंबर आने चाहिए ना. हमारे टाइम में 60-70 बहुत ही वैल्यू थी, अब तो 100 से 105 ही आने चाहिए. मतलब इतना टफ हो गया हर चीज में ना, तो मेंटल इशू विल इंक्रीज. Very true, sir. Very true. Can I also mention, Meenal, in line with what Mahima is saying again so emotionally, passionately, and correctly, I think, and what you are adding. Till now, I have spoken more about how there are a lot of good values to our cultural system, and we need to retain that. Let's also recognize that all cultures have their positives and negatives, and maybe the colonial history of 500 years, maybe collectivism of few thousand years. There are also a few aspects of our culture that we need to share and learn from the West, to be fair. And one important part is what Mahima was saying, non-judgmentality. Let's face it. In our culture, being judgmental comes fairly easy. We don't even realize it. It is inherent. Even we do it sometimes. Within Yes. within us, we do it. Yes. Sometimes. And Yes, ma'am. we don't even realize that. Exactly. So जैसे महिमा कह रही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें conscious effort करना पड़ेगी for being non-judgmental. I mean, let's not even analyze sociologically ऐसा क्यों हुआ, but non-judgmentality, acceptance, inclusivity, inclusive living, inclusive society was a reality in the past. In recent past, it has not been. As we are becoming modernized and urbanized, ostracization, exclusivity हो रही है, उसको थोड़ा हमें कोशिश करना पड़ेगा. So the balance, if I might say, is in a global world, and the pandemic has taught us that, right? You know, Dr. Meenal, as a public health professional, full-time public health professional, much better than any one of us. There are a few positive lessons of the pandemic, and one of which is that we are all living in a global world where we can learn from each other. So in terms of public mental health, good lessons to learn from the West. Importantly, good to know what to not pick up from there. Allow me to mention one phenomenon that I'm very fond of. I have not written about it. I should. What I refer to for the last 20 or so odd years is over-psychiatricization. And that's the danger. While increasing mental health awareness is important, while acknowledgement and acceptance is important, while treatment gap to be reduced is important, we don't want to do what some of the Western world, and especially one country, has done, over-psychiatricization, which is to turn every small problem of day-to-day life of an individual, of a couple, or a family into a psychiatric label and given medicines. You see? So you all follow what I'm saying. Over-psychiatricization is a huge danger. Means trying to label and diagnose everything. और अपना काम कर लिया, diagnose कर लिया, दवाई दे दी, किस्सा खत्म. क्यों गुरविंदर जी, तुसी की क्या हाँ, एक्चुअली ना क्या जो सर कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आजकल ना इंश्योरेंस की पॉलिसीज आ गई हैं. इंश्योरेंस की भी तभी आएगा कि आपको डिसऑर्डर का लेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे सर कह रहे हैं, अब ना ब्रीमेंट पहले ना सिंपल प्रोसेस होता था, ब्रीमेंट, उसको भी डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया. ब्रीमेंट जैसे ना डेथ होनी है, तो उसको भी उन्होंने डिसऑर्डर में कन्वर्ट करके तो मेडिकलाइजेशन. सर इज एब्सोल्युटली राइट. डॉक्टर गुरविंदर, आप हमें साइकोथेरेपी के बारे में बताएं सर, क्या है, कैसे होता है? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जैसे अब सर ने काम किया, पहले हमारे कंट्री में ना बहुत अच्छे साइकोथेरेपिस्ट थे, बड़े अच्छे. डॉक्टर नेकी हो, अगर आपने GS नेकी का नाम सुना हो, तो उन्होंने गुरु चेला कॉम्प्लेक्स दिया. अब क्या है कि हर बंदा साइकोथेरेपिस्ट तो बन रहा है, बट कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सेंटर नहीं है. हर बंदा कहता है ये मैं काउंसलर.
IMA this, psychological intervention. बहुत फर्क है. Psychotherapy is different, psychological intervention is different, counseling is different. इतने स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, बट इज साइकोथेरेपी. बेसिकली इट इज ए टॉक थेरेपी. जो हमारी आवाज जैसे पेशेंट का मैंने नाम पूछा, ओपीडी में आया ना, वहां से अगर मैं उसकी हिस्ट्री, वो भी एक साइकोथेरेपी स्टार्ट हो गया, रेपो बिल्डिंग सेशन शुरू हो गया. हमारे कंट्री से लोग ना यूएसएमएल में जाते हैं. देखो एमबीबीएस में हमारे ना सब्जेक्ट नहीं है साइकेट्री, अनफॉर्चुनेट. इतने साल हो गए, सो मच प्रॉब्लम, सर्वर सेइंग इतनी प्रेवलेंस है, सो मनी सेइंग, कोई सब्जेक्ट नहीं है. जो यूएस से जाता है बच्चा, तो सबसे पहले वहां पे बिहेवियर साइंस ही पढ़ाया जाता है, उसको पूरा कराया जाता है. बेसिकली साइकोथेरेपी जो है 3 वेव्स में आई, जैसे मैंने बताया कि टॉक थेरेपी है. देखो देयर आर साइकोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी. ड्रग्स का देखो और साइको, दोनों की आप डेवलपमेंट देखो. इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है, इतने एंटी डिप्रेसेंट आ गए हैं, इतनी एंटी साइकोटिक. अगर हम आज इसको करना शुरू करें तो 1 महीना लग जाएगा. तो साइकोथेरेपी अगर आप देखोगे, जो हमारी ट्रेडिशनल थी, जैसे पहले होता था ना, फेथ, लोग फेथ हीलर के पास जाते थे, है ना, प्रीस्ट के पास जाते थे, अभी भी जाते हैं, बट वो कुछ करते थे, समथिंग वाज देयर. सो साइकोथेरेपी में पहली वेव्स आई, उसका कोई बिहेवियर था, तो बिहेवियर थेरेपी आ गई. फिर उसमें क्या हुआ कि हमारी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर, 3 चीजों का एक ट्रायड है आपस में, इसको कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ गई. तो आजकल जैसे अभी सर कह रहे थे कि नॉन जजमेंटल होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तो थर्ड वेव साइकोथेरेपी में माइंडफुलनेस बेस्ड कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ गई. फिर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी आ गई. जैसे आप हमारे पंजाब में आओगे ना, 2 नशों को लोग नशा नहीं मानते, एक अल्कोहल को, एक तंबाकू. स्मोकिंग को वो कहते हैं ये तो नशा ही नहीं होता, ओपिएट्स का नशा होता है, मतलब हुक्की अफीम का नशा होता है. तो लोगों को एक्सेप्टेंस ही नहीं है. सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस आएगी, है ना, एक्सेप्टेंस आएगी, फिर नॉलेज होएगी, फिर इसको ट्रायल देंगे. तो ये जो साइकोथेरेपी वाला ट्रेनिंग वाला पार्ट है, वे बहुत लिखना हो गया, मतलब बड़ी अन प्रोटोकॉल है. उसके कुछ सेशन होने चाहिए, जैसे साइकोथेरेपी होती है ना, उस पेशेंट की रेपो बिल्डिंग सेशन होने चाहिए. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखते हैं कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल माइंडनेस कैसी है. हमारी जब कोई भी ट्रीटमेंट आती है, उसकी इंडिकेशंस होती है, अभी हाँ, उसको अपने, हमारे भगवान ने ना हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म दिया, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रेजिलियंस पावर दी है. मतलब हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वो मेच्योर भी हो सकते हैं, इमेच्योर भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले जब भी हम साइकोथेरेपी करें, हमें उसकी इंडिकेशन देखनी है कि उसमें साइकोलॉजिकल माइंडनेस है कि नहीं है. कोई पर्सन का आईक्यू ही बहुत कम है, कोई को 70 है, तो उसको साइकोथेरेपी ऐसे नहीं देनी है. उसके लिए पहले उसका सेशन लगाना है कि वेदर इज ए फिट फॉर साइकोथेरेपी. अब देखो कितने सेंटर खुल गया, वो कहते हैं साइकोथेरेपी कर दी. ऐसे नहीं होता, उसके सेशन होते हैं, कुछ एजेंडा होता है, कुछ होमवर्क असाइनमेंट होती है, कुछ एक्टिविटी देनी चाहिए. फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, पेशेंट को मूड की प्रॉब्लम है, तो पेशेंट का हम एक्टिविटी शेड्यूल बनाए भी, अपने मॉर्निंग में ये करे, इवनिंग में ये करे, तो उससे ब्रेकअप होगा, उसके एक्सरसाइज और शेड्यूल एक्टिविटी बनानी चाहिए. तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डिफरेंट वे में थेरेपी जरूर आई है, बट ना तो थेरेपिस्ट है, ना ट्रेनिंग है, और अनफॉर्चुनेटली एमबीबीएस का कोर्स भी नहीं है. तो ये चीजें होने से बहुत. काउंसलिंग नाम की टर्म है, ये भी बहुत लूजली नहीं यूज होती, हर कोई काउंसलर है. तो काउंसलिंग तो हमने जो सीखा है थोड़ा बहुत ही, कि इट्स अ फुल प्रोसीजर, मींस ऐसा एक पूरा प्रोसेस है उसका, उसके सेशन होंगे, उसमें प्रिवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल, जैसे भगवान कृष्ण ने, अगर आप देखोगे महाभारत में अर्जुन की काउंसलिंग की, अगर आप देखोगे ना, जैसे अगर आप देखो ना, वो काउंसलर थे, जैसे उन्होंने काउंसलिंग, मतलब जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी को आप देखोगे तो उन्होंने अनंतपुर साहिब में एक काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग इज ए प्रोसेस. इसमें दोनों 2 वे चैनल, म्यूचुअल 2 वे कम्युनिकेशन है. मतलब इट इज ए वेरी नॉट सिंपल कि हर बंदा ही काउंसलर बन जाता है. तो इसकी पूरा प्रोसेस है, पूरा कोर्स होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड. हम बात पे कहते हैं काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसिल कर दिया मैंने, उसको काउंसिल कर दिया, 1 मिनट में आते जाते काउंसिल कर दिया, हो गई काउंसलिंग. हाँ, तो वो मतलब बड़ी. मैं आपको एक मिसाल दूं, डॉक्टर मीनल और गुरविंदर जी, and I hope Mahima will agree. She is our social science colleague for today. दो मुद्दे हैं मीनल. I suppose you are still on AIIMS Delhi faculty, right? और गुरविंदर जी तो AIIMS बठिंडा में है ही. बट AIIMS को भी, जैसे हमने देश का नाम नहीं ले, एक देश को छोड़े, इवन कंट्री वाइड, like you are saying, Dr. Meenal, you know, anything and everything is called counseling. वो PG सीट एलोकेशन होती है ना, उसको भी काउंसलिंग कहते हैं. व्हाट काउंसलिंग? भाई ऑर्थोपेडिक मिल रहा है, लेना है. आपको MAMC में ऑप्थेल्मोलॉजी मिल रहा है, लेना, या लेडियाटिक में ऑर्थोपेडिक. दिस इज नॉट काउंसलिंग, राइट? दी लूज टर्म. अच्छा, इसका एक और एग्जांपल बताऊं जो गुरविंदर कह रहे थे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं. डिफेंस जो होता है ना, एंड ह्यूमर इज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस, इंक्लूडिंग फॉर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक स्लाइड है दैट आई ऑफन यूज इन लेक्चर्स.
I don't have a washing machine at home. Okay. If I go to buy a washing machine, and if the lady or the gentleman at the shop or the outlet advises me and helps me make a decision, top loading or front loading, automatic or semi-automatic, kitni capacity wala. Now, इस process को counseling कहोगे क्या? उस दिन से डरिए जब वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर काउंसलिंग वर्ड पकड़ लेगा, वो वहां बोर्ड लगा देगा, washing machine counselors available, come and buy. So I am totally with you, Meenal, when you say कि बहुत looseness हो गया. Like Dr. Gurvinder was saying, to summarize, jokes apart, see, एक है in-depth developmental of person's psychotherapy, बहुत in-depth process है. Then you have mental health counseling. The people with distress, उनको help किया. Then there may be vocational educational counseling. Our social work colleagues are very well trained in counseling, in fact, better than medical doctors and even psychiatrists. I agree with Gurvinder. Social work, masters or bachelors में counseling की training और intensive और अच्छी होती है as compared to even psychiatry PG. Okay. And then there are, of course, lay counselors or peer counselors. One development I want to mention here, Meenal, if you will elaborate, if you must know better. एक चीज जो अच्छी हुई इस देश में पॉलिसी लेवल पे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में ये हुई है that like MCI and RCI, which regulate medical and some social work professionals, now this recent Allied Health Professionals Act has actually recognized a whole lot of 17 categories of allied health professionals, including medical counselor, mental health support worker. So it should not remain, as you and Gurvinder ji are hinting correctly, it should not remain informal or unregulated. See, there will be some difficulties. Some people will not like it. Some people will object, but there will be a mechanism developed over time for organizing the training, ensuring the quality, and regulating the activities of all this spectrum of professionals. Yeah. So that's wonderful. Allied Health Professionals Act ban gaya hai. Councils अब apparently the ministry has appointed the councils, gradually वो शुरू हो जाएगा. और उसमें एक बहुत important category है 17 mental health support worker. Okay. Which for our country is a huge asset. See, there are a lot of free citizens, especially women in their middle age or elderly age, who have the goodness of heart, who want to help the society. But rather than it being totally informal, it will be slightly formalized, some training, some regulation, registration, and then there'll be a huge army of mental health support workers available. Okay, great. Means these are auxiliary workers who will be exactly. Because we can't have these many psychiatrists as the number of as the population and the burden we have. Yes. Yeah, exactly. So I want to listen to Mahima a little more. Mahima, yeah. Mahima, we would like to know from you the नया जीवन शैली जो है जिसमें हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बढ़ गया है, क्या ये चीजें हमें मेंटल हेल्थ एपिडेमिक के तरफ लेके जा रही है, स्पेशली इंडिया में? I do have to think about it. It's obvious that social media again, like it gets exhausting because of social media, and I would like to mention how we can help workplaces to work on the mental status, just like promoting mental health, wellness in the workplaces, and daily life involves a very supportive, and it should have a supportive environment with your colleagues and encourage open communication, especially, and breaking the stigma and providing resources for employees or individuals now who can seek help when it's needed. Yeah. So implementation of a stress reduction technique. जैसे स्कूल में भी अभी काउंसलर की फुल टाइम पोस्ट है. This is for school going adolescents or maybe pediatric age group also. So that post is very vital.
and the responsibility which comes with the post is very important. But is it really happening on ground? Sir, aap bataye, sir. Most often, unfortunately, government sector or private sector, दोनों में counselors get appointed, but the local management uses their services and time for teaching. Yeah. That's changing over time in last 20 or 25 years, gradually, with everyone's effort. But I agree with you. It's still, but I want to go back, if you permit, to social media that Mahima was responding to your question about. I have 2 points to make. And like I said, I mean, Gurvinder beach mein hai hamare, lekin aap log mashallah or younger ho. I want to make up 2 points about what Mahima was responding to your question about social media. One, I think there is. Please, I also please involved the workplaces. I know. No, अच्छा little किया. confused बताओ, please. about the question, so I Please. also involved the workplace, just like how we can manage a good mental health and foster a mental support in workplace. So I mixed Sure. that topic. I was quite. Oh, no, I agree with you. In addition, जो 2 मुद्दे कहना चाह रहा हूँ. See, I think human race has a tendency, and our culture has this a little more. Again, one of the things to be perhaps examined and corrected. We always are very hesitant and ambivalent, if not unnecessarily critical of any new technology. I remember when I was very young, pressure cookers नए आए थे ना, तो क्या pressure cooker में जो चावल बनता है ना, वो वैसा नहीं बनता जो सिगड़ी में बनता. Okay, I've always argued that every invention, every new technology is a double-edged sword, दो-धारी तलवार है. जब इंसान ने सबसे पहले आग इजाद की ना, fire, it was a huge help, but fire has its own problems. Knife has its own problems. Nuclear technology had its own problems. Similarly, social media and old modern technology is a double-edged sword. While we need to be careful about जो आप पूछ रहे थे ना डॉक्टर मीनल कि क्या एपिडेमिक आ रहा है, I really don't think so. ना कोरोना के बाद साइकेट्री एपिडेमिक आया है, ना आने वाला है, और ना ही सोशल मीडिया से आ रहा है. Yes, जो वल्नरेबल लोग हैं, बच्चे, युवक और एडल्ट्स या इवन एल्डरली, जो वल्नरेबल है वो एडिक्शन डेवलप कर सकते हैं, उनको अलग मदद की जाए. But I really think that we should anyway, we cannot stop the social processes, right? लोग social media use करेंगे. आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लेंगे? लोगों को अवगत कराएं, जिम्मेवारी समझाएं. But my other catchphrase, and as we are getting towards the end, आप बताओ, again professionally and younger generation, I would like to see as a mental health professional, public mental health professional and social person this way. Social media is the social support system for humans now. पहले जो social support हमें बातचीत करके मिल जाता था ना, वो अब social media के थ्रू मिलता है. इसका मतलब क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम पुरानी आदतें बंद कर दें? कतई नहीं. मिलना जुलना करें, फेस्टिवल्स करें, होली दिवाली मनाएं, बहुत अच्छी बात है. If we, like I said at the start, some of the traditional values, if we can retain, very good, but we must also accept the reality that in today's world. I want to add one point. Yes, please. Yeah, please. Sir, please I feel that we reduce the face-to-face interaction. We just feel that okay, social media पे बात कर लेंगे, video call कर लेंगे. So इससे क्या हो रहा है कि रिश्ते जो हैं वो थोड़े से कमजोर हो रहे हैं. Sure. अगर साथ में सामने मिलके जो कनेक्शन होता था कि हम जाते थे, खत लिखते थे, right? So even in the process of counseling, there are few steps like आप आमने सामने बैठे, कभी-कभी कहते आपके बीच में टेबल भी ना हो, उसका हाथ पकड़ सके, आप उसके आंसू पोंछ सके, आप उसको गले लगा सके. Yes, but my only point to both of you ladies, which is leading us social isolation as well, because my only point is कि जैसे आप दोनों कह रहे हो, मैं और गुरविंदर आई एम श्योर सहमत है कि वो हो सके तो बहुत अच्छी बात है, और वो ज्यादा बड़ा है इन पर्सन कांटेक्ट ग्रुप में और 1-to-1 में. लेकिन अगर वो ना हो सके तो सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट बनाए रखा, उसे एटलीस्ट slightly lesser but equal good solution है. For example, telemedicine and telepsychiatry and telecounseling epidemic के दौरान कितना काम आया. Correct. You know, I want to share a personal incident. So there were times like
So when I was like really anxious, so the group of friends were there on video call. They used to be on video call for 2 hours, 3 hours. Particularly, can you believe, like 2 to 3 hours they are on video call just to see me and support me through video call. They cannot do anything in the time of pandemic, but they were available there through video call. So it meant a lot for me. I mean, I can't even imagine. I mean, Right, this right, is the totally. youngster speaking. So हाँ, ये जैसे देखो हम हमारे लोग भी ही समझ से बाहर की चीज है। गुरविंदर और हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आपसे डॉक्टर मीनल या महिमा अब तक मिलना नहीं हुआ। आज ये कनेक्शन वेबिनार उसी करके हो रहा है ना, सोशल मीडिया का यूज हो रहा है ना, वेबिनार पे भी वही यूज हो रहा है। कदों मिलेंगे और बढ़िया होगा, डेफिनेटली, है ना। लेकिन सो बेसिकली क्या होता है, वो बद से बदनाम अच्छा ये हो जाता है। मतलब ना सोशल मीडिया को हम लैम्बास करना एक फैशन हो गया। It should be used judiciously. हाँ, Gurvinder, thank you Mahima for sharing your experience. डॉक्टर गुरविंदर, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ टिप्स बताइए हमारे देखो, ये ऑडियंस बहुत के ही लिए। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट को तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं। बेसिकली ना सबसे पहले तो तनाव का मूल कारण ढूंढने की कोशिश करनी है, क्या कारण क्या अगर मिल जाए। दूसरों की मदद लेनी चाहिए। बहुत सबसे बड़ी बात है कि नहीं कहने की भी आदत आनी चाहिए। देखो ना, हर चीज यस यस कही जा रहे हैं। देखो महिमा नहीं कह रही है, तो नहीं करने की भी आदत आनी चाहिए। समय का प्रबंधन होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी आज जैसे आजकल का टाइम है ना, समय प्रबंधन। दोस्तों और परिवार से रिश्ता और करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा नेचर के पास जाना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज हल्की फुल्की जरूर करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। आपकी जो नींद है ना बड़ी पर्याप्त होनी चाहिए। और हमारे अंदर ना अहंकार बहुत होता है, मीज बहुत होता है, तो मीज कम होने चाहिए। जितना हमारे में होगा ना तो बहुत, तो जितना हम सोशल सपोर्ट, जितने फैमिली फ्रेंड्स, तो हमने एक ना टर्म कॉइन किया है, इमोशनल बैंक अकाउंट। कम से कम आपके 5 अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, कम से कम। फ्रेंड दो तरह के होते हैं, एक क्राइसिस को बढ़ा देते हैं, वो वाले फ्रेंड नहीं होने चाहिए। वो जो जैसे बचपन का कोई दोस्त है, जैसे आपको कोई मदद चाहिए तो होनी चाहिए। अभी महिमा बता रही थी ना, उसको ग्रुप में उन्होंने बड़ी मदद की। तो हमारे जो इमोशनल बैंक अकाउंट है बड़ा हेल्दी होना चाहिए। तो स्ट्रेस को, मतलब स्ट्रेस की इन्वर्टेड यू शेप कर्व होती है, मतलब कुछ स्ट्रेस अच्छा होता है, मतलब बट अप टू सम लिमिट, देन इट इज वेरी हार्मफुल। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। जैसे वेबिनार कर रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव है, इज वेरी थोड़े टिप्स, 4-5 टिप्स ही 2-3 टिप्स ही करेंगे तो आता नहीं है। तो आजकल मैं जैसे माइंडफुलनेस करवाता हूँ, तो हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, म्यूजिक का बड़ा अच्छा रोल है इसमें, हॉबीज का बड़ा अच्छा रोल। अपने हॉबीज होनी चाहिए, कोई प्लांट लगाना चाहिए, है ना, हॉबीज का बड़ा अच्छा रोल। तो ये चीजें बहुत अच्छी है, कोई पेट डॉग हो, कुछ हो, ये दीज आर वेरी स्मॉल टिप्स। थैंक यू सो मच सर। ये बातें सुनते हुए भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीव हो रहा था ऐसे। डॉक्टर निमेश सर, आप हमें कुछ ऐसी केस स्टडीज बता सकते हैं या बाहर के दूसरे देशों के ऐसे कोई एग्जांपल्स है कि जो उन्होंने सेट किया टू अचीव बेटर मेंटल हेल्थ? जैसे हम देखते हैं कि हर कोई अचीवमेंट्स के पीछे भागी जा रहा है, तो ऐसे भागदौड़ भरे दुनिया में ऐसे कोई केस स्टडीज है या एग्जांपल्स है? इस क्वेश्चन के साथ आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं बस राइट। See, मेरी ये, I mean, again, you're a full-time and a more experienced public health professional. I've only been in last second half of my 40 years. But my thought is this, और ये major issue है. See, societies are very different. कुछ हद तक US of A और हम लोग similar हैं. Large, multi-ethnic, multi-racial, mixed, open. Dr. Navya, please mute your mic. Yeah. Okay. तो यूएसए और हम लोग सिमिलर हैं, बट अदरवाइज क्या है कि देयर आर एग्जांपल्स ऑफ गुड डेवलपमेंट, जो मैं पहले रिफर कर रहा था, गुड सोशियो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विद सोशल मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स बीइंग रीजनेबली ओके। देयर आर एग्जांपल्स। डॉक्टर नाव्या, कैन यू हियर मी? प्लीज म्यूट द माइक। नहीं, म्यूट उन्होंने कर दिया और कहीं से आवाज आ रही है। हाँ, मे बी गुरविंदर जी से। हाँ, अच्छा, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि while there are examples, और जो आप पूछ रहे हो ना, नॉर्डिक कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड या न्यूजीलैंड, पैसिफिक में, where there has been good development with mental health being reasonably okay and mental health being available to everybody. Or there are totalitarian regimes like the Arab Gulf or Singapore, or where there is total control.
But if we want large societies like ours, multi-ethnic, multiracial, free, democratic, open market, it's difficult to find examples. We will have to find our own solutions. अमेरिका को फॉलो करेंगे तो बहुत गलती करेंगे ब्लाइंडली. कुछ चीजें हम उनसे सीख सकते हैं, बट बहुत सारी चीजों में हमें अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढने पड़ेंगे. एंड दैट इज वेयर फ्रैंकली पब्लिक मेंटल हेल्थ का महत्व बहुत बढ़ जाता है. If I might say slightly exaggeratedly, not only for the field of health sector, but public mental health is crucial to larger social homeostasis and national development. तो public mental health का और public health का जो role है ना for the larger human story, including India, is actually much more. क्या हम लोग 21वीं सदी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे फ्रॉम इंडिया कि हमारा हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएं, फर्स्ट टॉप 3 में आ जाएं, जीडीपी पर कैपिटल जीडीपी बढ़ जाए, बहुत अच्छा है. बट साथ साथ डिवोर्स रेट, सुसाइड रेट, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, वो सब भी कंट्रोल में रहे. नाउ दैट्स अ चैलेंज. आई डोंट थिंक देयर आर इजी आंसर्स, और मॉडल्स कहीं से रेप्लिकेट करना थोड़ा गलत होगा क्योंकि सोसाइटीज अलग है ना. WHO की थीम थी एक बारी, डिप्रेशन लेट्स टॉक. या दैट वाज वन. और इस बार वो है ना WHO और WFMH का कल का जो 10 अक्टूबर का था, मेंटल हेल्थ एज यूनिवर्सल मेंटल हेल्थ राइट, ह्यूमन राइट. ठीक है. अब अगेन सी एज अ स्लोगन बहुत अच्छा है, बट इफ आई अगेन यू आर अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, सी माय इंडिविजुअल व्यू एंड आई थिंक रियलिटी इंपॉर्टेंट है. स्लोगन बनाना बहुत अच्छी बात है. 71 में गरीबी हटाओ था, आप लोग सब बहुत कम थे, बाकी बाद में आए स्लोगन्स. When you say mental health for everyone is a universal human right, that's a wonderful goal, but almost impossible. At least let us aim to get mental health care for everybody. Yeah. सबको mental health care मिल जाए, यही बहुत है. क्योंकि मेंटल हेल्थ की अगर बात करेंगे, जैसे मैंने शुरू में रेफर किया था, ओके, अलाउ मी दिस, लास्ट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हैज नाउ एक्सेप्टेड व्हाट आई बिलीव फॉर अ लॉन्ग टाइम. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पब्लिक मेंटल हेल्थ विजुअलाइजेशन, if you also agree. मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर्स, उनको आइडेंटिफाई करें, ट्रीट करें, रिहैब करें. मेंटल डिस्ट्रेस, what Mahima is referring to and what Gurvinder is referring to in his treatment, and mental wellness. So mental illness, mental distress, mental wellness. Now mental illness को आइडेंटिफाई कर ट्रीट कर लेंगे, पॉसिबल है. मेंटल डिस्ट्रेस लोगों की कम करेंगे, फिर भी पॉसिबल है. Now mental wellness becomes economic, political, beyond health sector. Mental status is a very dynamic thing. हाँ, another बहुत moment and ऊंची this, चीज है. I even agree with sir. Just like 2 or 3 things, like mental health, mental difficulties, and then comes mental wellness. disorders. Yeah. So correct. mental disorders, like mental health, mental difficulties. Difficulty is something which we all go through once in our lives. We all. But when it comes to disorders, then there are personality disorder and this phobias. And then eating disorders, personality disorder, mood disorder, it's basis on mood as well. So the first one I mentioned, mental health and mental difficulties. These 2 things can be can get solved by counseling, but we need therapy and structured therapy and the treatment for mental disorders. ठीक है. Dr. Gurvinder sir, any last I will do 1 minute relaxation exercise, 1 minute breathing exercise, just 30 seconds. Thank you so much sir. Please close your eyes. कृपया अपनी आंखें बंद कीजिए प्लीज. एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को रोकिए, उसे धीरे धीरे छोड़िए. लंबा सांस लीजिए, सांस को रोकिए, मुंह से धीरे धीरे छोड़िए. मन में काउंटिंग कीजिए
1 लीजिए 2 3 4 4 3 2 1 धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, तो आपने ऐसे करके मुंह पे लगाना। थैंक यू डॉक्टर मीनू, थैंक यू। 1 2 का 4 4 2 का 1 To make the moment really light. Yes. And thank you so much for Thank having such a great Very speakers. nice. And Thank you. we had a very interactive session. And really ये हमारे audience के लिए बहुत helpful रहा होगा. And बहुत बहुत धन्यवाद और thanks के साथ Thank you so much. आप सब Thank लोगों you. को have a great day. I really want to share something. Sure, please, So Mahima. I'm like really delighted. I was like really delighted to be a part of this discussion. We all are. Mr. We are. Desai and Mr. Singh were experts, and speaking with this experts means a lot. And I just don't know from where I gather this courage to speak in front of all these experts. नहीं हम तो I'm आपको और feeling सुनना like चाहते हैं, हम तो आपको और सुनना I'm चाहते हैं. feeling really proud of We want to myself listen to right you now more. because You were the Thank voice you of so youth much, for today. Yes. So definitely. So Can there I are just say times- one quick phrase in the end जो मैं epidemic Please, के sir. दौरान सीखा मानव जाति के लिए, sharing is caring, Sharing is caring. Yeah. है ना, and bilateral. Feel free to share your own distress, create an atmosphere where others feel comfortable to share with Yeah. you. Yeah. Yeah. So sharing as a bilateral process, you know, if we can छोटी create a बातें पर बहुत बड़ा implication है इसका. हाँ, है ना. I'm really Thank thankful, you, Dr. everyone. Meenal. आपने इसको Bye. बुलाया Thank you so अभी. much, sir. Great fun. Thank you, Dr. Gurvinder, Dr. Thank you, Nimesh, sir. Thank you. Mahima. Thank you. Bye.